right? ये वो इस पे mention नहीं किया हुआ, लेकिन I think in the name of the lecture it's mentioned. It's rigid body kinematics, and in the kinematics we had actually finally gotten up till looking at general motion, but within one plane. And in that too, then we were looking at acceleration in our last lecture. उससे पहले we had seen velocity, we had looked at analyzing velocity, or for the velocity also last time in the lecture we also considered one more method, which was the instantaneous center of rotation, जिसको हमने पिछली दफ़ा ही सिर्फ discuss किया था. Okay, so let's get back to acceleration and carry on where we were, which reminds me I should start the recording. Okay, so we were looking at analyzing acceleration. So for acceleration we saw okay, the procedure is basically the same as what we had got for velocity using a base point, which is okay, we consider that the general planar motion consists of actually the sum of translation and rotation. So what we do is, for example, if I have some arbitrary point B on the rigid body, then what I do is I can choose another point on the body as my base point and first consider that the entire rigid body translates with the base point. See, so that's just the acceleration of the due to translation, and then add on top of it the acceleration arising because of rotation. Now we know कि जब rotation होती है तो फिर तो there are two components of the acceleration. One is the normal component and the other is the tangential component, या vice versa जैसे कहना है, such that, और हमें वो भी पता है कि वो होते क्या हैं exactly, right? Rotation की acceleration से. So we can pop those back into our expression for the relative acceleration of an arbitrary point B on the body given the acceleration of point A. So here we are. So we've got the acceleration of B is actually going to be the acceleration of A due to translation, and then add on top of it the tangential and then the normal components because of rotation. ठीक, so things which are again एक एक step करके build होती जा रही है हमारा dynamic analysis from what we had started with. Perfect. Okay, so I hope this part was all clear. उसके बाद we moved on to looking at a particular example when we have a body which is rolling or rolling without slip. मतलब ये कि the point of contact actually sticks with whatever our sort of base surface is. ठीक, तो उसका हमने velocity का analysis, इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं, उसको भी दोबारा देखा था, लेकिन फिर हम acceleration पे we had moved on. Or we noted that in the case of acceleration, both the point of contact and the geometric center of the body, they both have an acceleration. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे velocity में तो a zero होता है ना, ये जो contact का point है उसकी velocity zero होती है, right? That's why it acts as the instantaneous center of rotation. But for acceleration, both of them have accelerations. Such that if we just look at the problem physically, we can note कि जो center of the body होगा, the geometric center या फिर the center of mass या फिर the center of gravity, if we're just looking at a uniform density and gravitational field, then that point moves in this case to the right, horizontally is the key part. So it just moves horizontally. So that's why that point has this component of acceleration, और हमने इसका analysis करके देखा भी था कि why does it turn out to be alpha r in the I direction, whereas the point which is in contact with this ground or the surface, that one has a vertical acceleration acting upwards, because right at the next instance this point gets moved, it has a velocity that moves upwards right at the next instance. ठीक है, मतलब ये कि उसको एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होती है ताकि ज़ीरो से फिर उसकी ये कोई वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में हो, राइट? सो दैट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड टर्न्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर्ड r, where r is the radius of this rolling circular rolling disc acting in the j direction.
right? So all of these things we discussed, and then we jumped on to doing one example. You see rolling body ka, जिसमें we were trying to find out the acceleration of other points on the sort of the surface of the ball, or if it was a wheel, then the rim of the wheel, and so on. Given that we already know कि इसकी angular acceleration or angular velocity क्या है, right? So for this we saw that we do need this information, this prior information. कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होती है, ताकि हम अगले पॉइंट्स को फिगर आउट कर सकें. और अगले पॉइंट्स को हम किस तरह फिगर आउट करेंगे? यूजिंग आवर relative motion analysis. Perfect. So this is how far we had got. Now let's jump to doing some more problems so that we can practice this. Of course, this will only be a useful hour, productive hour for you if you have if you're attentive, of course, enthusiastic. Secondly, in my opinion, matlab enthusiasm is important. Thirdly, you're like, oh, हमें problem solve करनी है, you know, you get a kick out of it. At least I get a kick out of it. But fourth, that you actively engage and participate. So please do get a pen and a paper and a calculator and solve these problems with me. So only then that आप लोग इसका you'll be making the most of this. There is no use if I'm just solving it myself, you're not listening, you're not participating, या फिर if I just read through it और हम आगे चलते जाएं, ठीक है? हमने solve करना है ताकि हम practice करें and we learn by actual practice and sort of kick up our mental skills as well. ठीक है जी. So इसलिए आई एम गिविंग यू जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स. मैं एक्स्ट्रा ऐसी बातें कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने पेन पेपर कैलकुलेटर लेके आए सब लोग. ओके उसके बाद व्हेन समवन विल कंफर्म दैट यू गॉट इट एंड यू आर सॉल्विंग इट विद मी, देन आई विल मूव ऑन. So no one has got it. मैम ले आए कैलकुलेटर. ले आए. Thank you. Okay, so let's jump in then. Right, so we have again a mechanism, as we've been seeing, which is converting rotatory motion into this to and fro translation motion for this slider B. और अब हम इसका ना, ज़ाहिर है हम पहले mechanisms का velocity analysis कर रहे थे. Now let's jump into looking at the acceleration parts of these mechanism that we looked at before. Now, in this case, what's happening? So there's this disk which is rotating with angular velocity of 3 radian per second and an angular acceleration of 8 radians per second at this instant. Perfect. Now, what we want to do is we want to find the acceleration of the point B and the angular velocity and acceleration of link AB. ठीक है जी. मतलब ये कि मे बी हमारी कोई क्या चीज़ें थी, मे बी कोई हम टनल डिग कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, और उसके इधर एंड पे कोई क्या कहते होते हैं इस तरह साइडवेज टनल डिग कर. इसका एक नाम होता है बड़ा स्पेसिफिक इन सॉर्ट ऑफ माइनिंग एंड सो ऑन, व्हिच आई हैव फॉरगॉटन, आई अपोलोजाइज. सो लेट्स कंसीडर कि वी वांट टू फिगर आउट कि ये जो हमारा यहाँ पे शवल या डिगर या कटर या वो चीज़ लगी हुई है टूल, उसकी क्या एक्सेलरेशन है. एंड ऑफ कोर्स यू गाइज नो कि आई थिंक यू गाइज कैन एक्सपेक्ट बाद में, अभी वी विल लुक एट दैट, कि अगर हमें उसकी एक्सेलरेशन पता चलेगी तो फिर ही हमें याद है आपको F इज इक्वल्स टू ma, वील बी एबल टू फिगर आउट कि ये कितनी फोर्स उस टाइम पे एग्जर्ट करेगा ऑन वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ इट. Right, so that's why you can imagine why would accelerations be so important in these sort of mechanisms. So let's try to find out कि B की acceleration क्या है, and in that process we want to find the velocity, angular velocity and acceleration of link AB as well. चलें जी अब ठीक है, इस पे शुरू करते हैं. So हमने find करना है AB, हमने find करना है angular velocity omega AB, और हमने find करना है alpha AB. These are the three things that we're trying to find. और yeah, so let's have a think about this. ठीक है जी. सबसे पहले तो tell me guys, this wheel, the disc is rotating in a clockwise direction, which means के what would be the velocity of A, the direction of the velocity of A.
राइट टू द राइट, एग्जैक्टली राइट, ठीक है जी, टू द राइट। दूसरा मुझे बताएं कि व्हेन दिस मूव्स टू द राइट, व्हाट हैपेंस टू बी, वेयर डज बी मूव टू? राइट। It also moves to the right, exactly right, ठीक है जी। अब ज़रा let us think about this, is so just one thing, B का मोशन A से cause हो रहा है इस केस में, right? ये तो I think हम सब identify कर सकते हैं। Now I want you to think about कि let's say हमने वो instantaneous center of rotation वाला तरीका किया था ना, या फिर सेंटर ऑफ ज़ीरो वेलोसिटी क्या कह लेते हैं, जिससे हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते थे कि एक किसी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। हाउ? बाय वी कुड ड्रॉ आउट के वो जी सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, और उसके हिसाब से फिर हम उनकी वेलोसिटी को डिवाइड कर लें अगर रेडियल पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, देन वी कैन फाइंड व्हाट द एंगुलर वेलोसिटी। सो आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट, अगर ए भी राइट पे मूव कर रहा है, बी भी राइट पे मूव कर रहा है, तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हम कैसे ज़रा ड्रॉ करें? मैम सेंटर ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। कैसे? नूर, हेल्प मी आउट। परपेंडिकुलर लाइंस, आई होप दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू से। यस ठीक है जी। सो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ए की वेलोसिटी से होता है ना, राइट? क्योंकि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, या फिर ओमेगा क्रॉस्ड विद आर, सो दैट मीन्स के इन दोनों के परपेंडिकुलर। सो वेलोसिटी से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँ तो मुझे शायद आर मिल जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। ये मैंने ए की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, फिर मैंने बी जो कि ऑल्सो हॉरिजॉन्टल है, उससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये क्या होता जाता है? ये कहीं मिलेंगे? नहीं। नो, विच मीन्स के दी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या फिर चलें इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर, बेसिकली if I was trying to find the instantaneous center of rotation, that would lie at infinity, as we had discussed before, right? मतलब ये कौन सा केस था ऑफ मोशन? ये क्या हो रहा है? ये दोनों के दोनों यूं मूव कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन। एग्जैक्टली राइट, थैंक यू। आई थिंक दिस इज मुंजर स्पीकिंग। एट दिस इंस्टेंट ए एंड बी की जो वेलोसिटीज़ हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड इट्स एज इफ कि इंस्टेंटेनियसली ये चीज़ under translation है, instantaneously, by the way, remember, everything we're talking about instantaneously. So overall sure, this thing अभी अगले instant पे उसने फिर rigid body general motion में चले जाना है, लेकिन right now इन दोनों की velocities are parallel to each other, the instantaneous center lies at infinity, मतलब ये कि आर बी बाय सी या फिर आर ए बाय सी, जो सा भी कहना चाहें, they both lie at infinity, such that now comes to it के v is equals to omega r है अगर, और r is infinity, so what is omega? ज़ीरो है, बिल्कुल राइट। वेल डन मुंज। अच्छा, आई नो कि ये ज़रा मैथ्स वर्जन में बोलने से मे सीम अ बिट अननेसेसरी टू पीपल कि ये क्या हो रहा है कि अच्छा जी पैरेलल लाइंस हैं जो मिल नहीं रही, तो इसलिए रेडियस इन्फिनिटी पे है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है। लेट्स जस्ट डू अवे विद द मैथ्स पार्ट एंड जस्ट टॉक अबाउट इट फिजिकली, विच इज़ व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि ए इज़ मूविंग टू द राइट, जैसे कि मुझे आरिज ने बताया, और इस ए के मोशन से, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी, बी मूव्स, और बी तो है ही कन्फाइंड हॉरिजॉन्टली, सो देन बी ऑल्सो मूव्स with the same magnitude basically. So at this instant both A and B are moving with the same velocity, VA is equal to VB, which we know, उसका मतलब ये कि बस वो ट्रांसलेट दोनों साथ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से then we can immediately jot down कि ओमेगा ए बी क्या होगा? ज़ीरो। There is no relative rotation of B with respect to A.
because for this instance, this is what's happening with the mechanism. दोनों ही horizontally move कर रहे हैं, and hence why we are seeing there is no relative rotation of B with respect to A. Only for this instant. ये बात बहुत important है, जैसे हम पहले भी discuss कर चुके हैं. So just to clarify, I am not saying कि ये link AB general planar motion में नहीं है. वो है, वो बाद में जाके उसने अगले instant पे उसकी एक angular velocity आ जाएगी, ठीक है जी. लेकिन अभी के लिए it's as if कि instantaneously वो दोनों आपस में सिर्फ translate कर रहे हैं. Okay. So does that make sense? Noor, could you let me know if that makes sense? कि omega AB हमने कैसे निकाल लिया है? Yes, ma'am. Okay, perfect. Thank you. So एक चीज़ जो हमने निकालनी थी वो तो हमने सीधा छलांग मार के just looking at the physical problem we have figured it out that omega AB is 0. Now let's jump to the other things, or now that we know this part तो you'll see कि आगे तो फिर पुराना straightforward सी बात है, which is कि we're trying to analyze the acceleration components, right? So let's just jump in and apply our relative acceleration analysis. That is, if we know the acceleration of A, then we can figure out what the acceleration of B would be. Let me write that expression now. So AB would be the acceleration of A, translation की वजह से, then add on top of it whatever is the rotatory part of the acceleration. ठीक है, note के acceleration के अंदर rotation है, ठीक है, वो velocity में सिर्फ it was turning out कि omega AB was 0. So what would that be? That is of course the tangential part. So alpha BA crossed with RBA plus the normal part BA, which is minus omega squared RBA. और ये क्या है? ये BA की omega है. Great. So we've already seen that omega AB is 0. So this term just goes to 0. So there is no normal component of the rotatory acceleration. There's only just the tangential components. So now let's figure out what each of these terms are. Vector analysis करना है. तो सबसे पहले करते हैं कि acceleration of A लिख लेते हैं. ठीक है जी. A तो just this rotation about one axis when we look at this wheel. ठीक है जी. So acceleration of A के we know it's rotating about this. Let me call this O. Let's do that. ठीक है जी. So the acceleration of A is actually going to be what? Two components, one normal and tangential component, जिसके अंदर मैंने क्या V is equals to omega r होता है, A is equals to tangential जो है वो alpha r होता है because it's the tangential part, so it's similar to velocity. और A normal जो है वो क्या होता है फिर? Omega squared r, normal direction. Perfect. So here as well the tangential component would then be alpha times r, tangential इधर से इस डायरेक्शन में, so that would be, क्योंकि ये यूँ घूम रहा है, so I, and omega squared r नीचे की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, right? So that would be then minus omega squared r in the j direction. नोट के इधर मैंने ये अल्फा r और ओमेगा स्क्वायर्ड r को जस्ट स्केलर्स के तौर पे ले लिया है, बिकॉज मैं आधी प्रॉब्लम फिजिकली देख के जंप्स मार रही हूँ, राइट? So now let's pop those down. So acceleration of A is alpha times r is 200, so 8 times 0.2 is how much? 8 times 0.2 is 1.6 in the plus I direction, and then in the minus direction we would have 3 squared into 0.2. millimeters को मैंने meters में convert कर दिया है, so we get minus 1.8 J. Perfect. So what do we have then? Up to, I'm going to go quiet and solve this because I think we've all got it's just arithmetic left now.
Okay, guys, could someone confirm what the solution turns out to be? AB 2.66. ठीक है जी, थैंक यू तला, मेरा 2.64 है, क्लोज इनफ. और अल्फा? 5.2. परफेक्ट. ठीक है जी, ये तो कोई पढ़ के ही बता रहा होगा, ये इनका लिखा है तो ठीक ही होगा, लेकिन आई डू थिंक कि इफ तला ना है. कैलकुलेट किया. ठीक है जी, थैंक यू. तो तला ने सिंस अगर ये भी ठीक आ रहा है तो फिर ज़ाहिर है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें, दोनों होपफुली ठीक ही होंगे. एक सो आई होप एवरीबडी हैज़ गॉटन दिस फार. Just give you a few more seconds to solve out the problem and then just make a few comments on this. ठीक है जी. So I think most of you must have completed my. So just the one comment extra that I wanted to make was कि please A जो B है acceleration, sorry, just the slider B, it is confined to this horizontal channel. तो उसकी velocity भी और उसकी acceleration भी दोनों must be just in the I direction. That is why we are able to write down this little part right here as well. अगर वो सिर्फ horizontally confined है तो फिर तो उसका कुछ भी किसी और component में होगा ही नहीं ना. उसकी velocity भी और उसकी acceleration can only be in the I direction. ठीक? So we always do have to look at the problem physically और फिर उसमें से कुछ information extract करना. Right, great. So any questions? Anybody with any issues? नहीं? No, ma'am. चलें ठीक है जी. फिर let's move on. So इसका the solutions are also in the slides, of course. And we got that right. Now let's move on to one more example, but this one I think I'm gonna just read through it actually. So bear with me and I think आप लोग भी इसको ज़रा थोड़ा हल्का ले लें, कोई मसला नहीं है. So इसमें क्या हो रहा है, एक और mechanism, और at this instant the member AB has the angular motion as shown. So उसकी there's an angular velocity and angular acceleration which are given right here, 2 radian per second and 3 radians per second and 2 radian per second squared respectively. And then because of that, this slider again, C, just is able to move along this now inclined path या inclined channel. और उस inclined channel की हमें geometry given है. So D, E अगर given हो, जो कि given है यहाँ पे, then we can figure out कि ये angle क्या है exactly. ठीक, so we can find out, let's call it theta या phi, whichever one we want to, we can figure that out. राइट तो उससे क्या होगा कि फिर हम अपने लेट्स से वेलोसिटी के बारे में बात करें या फिर इवन एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, व्हिच आई विल डू इन जस्ट अ सेकंड. देन वी नो, अभी जिस तरह हमने बी के बारे में कहा, पिछले एग्जाम्पल में बी के बारे में कहा था, उसी तरह सी इज़ कन्फाइंड टू मूव इन दिस चैनल. तो जो भी हो जाए उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन दोनों must be in this direction. ठीक है. So if we know the orientation of this plane, फिर हम इनके vector forms को लिख सकते हैं in terms of their magnitude, और I और J के form में basically, just with the magnitude being the unknown. Right? So my point being the direction of the channel gives us some information about the velocity and acceleration of the slider. Perfect. तो उसके बाद फिर it's just a straightforward application again of the relative velocity and relative acceleration expressions. So इसलिए मैं कही थी कि let's just read through it. So what do we want to find? We want to find the velocity and acceleration of C. So velocity के लिए पहले हम velocity वाला analysis और acceleration के लिए फिर हम acceleration वाला analysis कर लेंगे. Ignore this one for now. Sorry for this. Sorry for putting it on here. So let's just see. So velocity of C is of course just a function of the velocity of B using the relative velocity expression.
तो वी बी हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी नो कि बी इज जस्ट रोटेटिंग अबाउट द फिक्स पॉइंट ए, राइट. सो नो नथिंग too difficult. I know इधर it's not written as a vector, so could just someone tell me कि ये given that these are this thing AB is rotating anti-clockwise, then what is the direction of the velocity of B? Left. To the left, exactly right. So that is, it's in the minus J direction, minus I direction. Okay. So when I write down then the vector expression for the velocity of C, then I do need to be careful कि मैं उसको, मैंने जैसे कहा, it's in the minus I direction, minus 420 I करके लिखें. Next, even for the velocity of C, as we discussed, we can write it down just in terms of its magnitude because हमें उसकी direction already पता है कि it must be along this inclined plane. Okay, let's assume कि वो इस downwards arrow की direction में है, then we get these minuses in here for the I and J components. Finally, omega crossed with RCB. So omega, we know we're talking about general planar motion. So omega must just be out of the plane. So omega k crossed with R C with respect to B. So this thing. जो अगर हमें ये C is given, A and B are given, so we can figure it out in the I and J component. Okay, इसलिए मैं कह रही थी कि it's a little bit of a trivial problem. The substitution ज़्यादा है इसमें. So that's why let's jump through it. So we can then separate out the I and J component and solve them to figure out कि okay, omega BC is this one, and following from that the velocity of C का magnitude is this one right here. उसकी डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता है, right? So that's it. We've got the velocity part. Now, of course, if you have to jump to the acceleration, वो भी, for that we just need to write down the relative acceleration expression. So just for a reminder, what that is the acceleration of C is going to be the acceleration of B, right, translation component, plus omega CB crossed with RC with respect to B minus omega squared RC with respect to B. ठीक, so इसके अंदर we can see कि we need the acceleration of B. तो B तो is just rotating about A, so it's just rotation about one axis. So AB के भी हम, I should just work with the slides. मैं चीज़ें repeat कर लिख रही होती हूँ, but it's okay. Repetition से goes into our sort of quicker brain system. So for the acceleration of B, we need to figure out its normal and tangential component. So normal component is omega squared R. So that's why we've got omega squared times R. And for the tangential components, that's alpha R. So that's what we have right here. नोट कि मुझे एटलीस्ट हमने मैग्नीट्यूड्स लिख लिए हैं, तो डायरेक्शन ज़रा बता दें. ये नॉर्मल डायरेक्शन तो इट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, सो इट्स फ्रॉम बी टू ओ. तो व्हाट वुड दैट बी इन आई जेज? व्हाट इज़ द नॉर्मल डायरेक्शन? Minus J. It's minus J. Thank you very much, Tala. And then what about the tangential component of the acceleration of B? In direction of VB. BB की डायरेक्शन में, which is what? BB यूँ जा रही है तो माइनस आई. थैंक यू. तो फिर बस काम बिल्कुल ही आसान हो गया, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स जंप डायरेक्टली. सो सब्स्टिट्यूट करें, ये रहे वो माइनस वाले ए बी आ गया, एंड देन जस्ट वही बात कि सब्स्टिट्यूशन अल्फा गोज इन हियर, अल्फा के हो जाएगा, आर सी विद रिस्पेक्ट टू बी वी ऑलरेडी नो, एंड ओमेगा स्क्वायर्ड का भी हमने ओमेगा फाइंड कर लिया था पहले ही, so that goes in there, and so on. And similarly also for the acceleration of c, let me assume कि it's downward. अगर नहीं होगा तो फिर मेरे पास ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, फिर मुझे पता चल जाएगा it's upwards along this inclined plane. So for now let me just assume it's this direction, so I can split it up in its I and j component. और अब फिर it's again just a straightforward case of
solving the simultaneous I and J equations. ठीक है जी. So इसलिए that's why I wanted to jump through it a bit quickly. Okay. So this is a straightforward example, right? One thing that was happening was that we are seeing that alpha turns out to be negative, whereas omega, omega was positive. ठीक है जी. Omega BC या omega CB was positive, whereas alpha CB is negative, which means कि omega CB was anti-clockwise, क्योंकि आपको याद है कि x, y इस तरह है और right hand grip rule से ये हमारा positive rotatory motion है, whereas alpha is negative, which means it is in this direction, it is clockwise. Perfect. Okay. No questions here? Someone please respond. जी मैम मैम कोई सवाल नहीं है. मुझे लग रहा है किसी को है. इसका यही मतलब है कि हमारे पास ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से अल्फा जो है वो नेगेटिव है. Oh, very good. Very good, yes. Because if they are in the opposite directions, then yes, that means कि अगले instance पे ये omega anti-clockwise जैसा that would end up decreasing. Yes, Tala. Good one. Whereas if they are both in the same direction, it doesn't matter कि दोनों positive हैं या दोनों negative हैं, then that means of course कि वो rate of change भी उसका उसी direction में है of the angular velocity, then that would be increasing. Yes. Okay. Good thing to point out. Thanks, Tala. Okay ji, so let's move on to some more problems, or again, let's see how quickly we can get through this. This one now is a rolling without slipping वाला problem जो हम पहले थोड़ा सा देख चुके हैं. अभी इसके बारे में हम ज़रा in detail देखते हैं. So first of all, we've got this double gear rack. ठीक है, ये again this is एक और sort of engineering sort of device जो कहीं ना कहीं इधर उधर यूज़ हो रही होती है, जिसके अंदर आपको perhaps वही कि किसी चीज़ को ट्रांसलेशन में चलाना हो along. मुझे कोई इसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल आई एम थिंकिंग लेकिन आएगी नहीं. क्लॉक्स. सॉरी, कह सकते हैं घड़ियों में होता है इस तरह मैकेनिज्म. घड़ी में तो लेकिन वो गियर्स रोटेशन ही करते चले जाते हैं. मेरे इधर देखें, इधर क्या होगा, इधर अगर लेट्स से कि हमारा ये गियर सी फिक्स्ड हो ना, तो अब हो ये रहा है कि लेट्स से कि इधर कोई मोटर लगी हो ए के ऊपर, ठीक है, और वो रोटेट कर रही है. इस केस में अगर इफ इट्स मूविंग टू द राइट, दैट मीन्स दैट दिस ए मस्ट हैव बीन, दिस व्हील, दिस गियर इज रोटेटिंग टुवर्ड्स व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज. No, sorry, clockwise. मेरा हमेशा ये गलत हो जाता है, clockwise. So what would happen then is कि this gear moves along this fixed rack या fixed lower, इसको वाले को ना rack कहते होते हैं आमतौर पे, ये जो इस तरह के horizontal gear teeth के साथ चीज़ होती है. So this actual circular gear will move along this horizontal rack, और उसकी वजह से ये जो B वाला rack है ना ऊपर, वो भी मूव करेगा, राइट, क्योंकि वो इस गियर से अटैच्ड है. तो मतलब ये कि आप एक रोटेटरी मोशन भी आपको मिल रहा है और साथ ही आपको एक ट्रांसलेशन भी मिल रही है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं फॉर योर डिफरेंट कंपोनेंट्स. सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप चाहते हैं कि मोटर साथ ही ऊपर नीचे भी जा रही हो, और कोई चीज़, कोई आपका ऊपर जो रैक है वो भी यूं मूव कर रहा हो. मैं उसके बारे में वही सोच रही हूँ कि क्या एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जैक्ट डिवाइस पे डिपेंड करेगा. आई एम सो सॉरी, आई कैंट currently think of an example जिसमें ये यूज़ होता हो डायरेक्टली, बट एनीवे आई अपोलोजाइज फॉर दैट. विल जस्ट सी राइट नाउ कि अगर ऐसा हो रहा है तो लेट्स से ये बी कहाँ जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला रैक किस डायरेक्शन में मूव करेगा. Will it move to the right or to the left? What will happen to that one? Let's see.
So in this case we have this sort of a double gear. हाँ, ऊपर से इसमें ये भी हो रहा है कि it is a double gear, so हम motion को change भी कर रहे हैं उसके magnitude को. So this double gear, ये जो ये वाला है, ये grey और blue, this rolls on the stationary lower rack, this one, and the velocity of the center of this double gear is 1.2 meters per second. So what we want to do is first to determine the angular velocity of the gear, double gear, and the velocity of the upper rack, ये वाला, ये जो R है, and the point D of the gear. ठीक है, तो अभी हम पहले सिर्फ velocity का analysis कर रहे हैं. Now let's see, isn't this the rolling motion one that we've considered beforehand? मतलब ये कि अगर ये fixed है, stationary lower rack है, और ये gear इसके अंदर meshed है, so of course ये C का point would have no slip with this lower rack. मतलब ये कि the velocity of C would then also be stationary at this instant. और अब हमें नज़र आ रहा है कि ये तो वही हमारी जो हमने एनालाइज किया था, एक व्हील जो रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन वाला एनालिसिस अप्लाई कर सकता है इस डबल गियर के ऊपर. सो लेट्स डू दैट. वी कैन सी दैट C acts as our instantaneous center of zero velocity, or in other words the instantaneous center of instantaneous center of rotation. Why? Because अगर मैं A से एक perpendicular line बनाऊँ, ठीक, और I know कि C की velocity ही zero है, so then the relative motion equation becomes that is, this is zero. So velocity of A is only because of rotation about C. So let's figure that out. V is clearly 1.2. So omega AC तो यूँ आ गया, और R C A क्या है? इस बड़े वाले का A से C तक का radius is this one. It's the radius of the larger gear, the outer gear. So it's 0.15. So we can see then omega AC turns out to be 8.0 radian per second square. और उसकी direction we can see, because A is moving to the right, then it must be rotating it must be rotating clockwise, right? So we found the angular velocity of this gear. और अब देखते हैं कि velocity of the upper rack क्या होगी. इस अगले part पे आते हैं. So this was part A. Now let's move to part B. Now again ये because वो gears आपस में fix होने हैं, वो अपने slots में जाते हैं, right? So that means कि this point B की वही velocity होगी जो rack पे भी उधर उसकी velocity होगी. So मतलब ये कि जो rack move करेगा, the velocity of R would actually be equal to the velocity of B. वही बात हमने की थी कि जो चीज़ कांटेक्ट में होती है उनके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स सेम होते हैं, तो इसीलिए the velocity of R is actually going to be equal to the velocity of B. And as we can see कि ये तो पूरा का पूरा gear is rotating about C, so the velocity of B is actually just अगर वो anti clockwise rotate करेगा तो it would be in this direction clearly. और मैं उसका magnitude इधर लिख देती हूँ, that would be omega multiplied by RB with respect to C. C is right here in the plus I direction. So that turns out to be 8 times this distance right here, and that is the sum of the two radii. मतलब ये कि पहले ये बड़े वाले gear का radius, फिर ये छोटे वाले gear का radius. So that's 0.25. So the velocity of R is then 2I meters per second. Right? And that's what I was saying is where something like this is used.
when we need both something, the motor or the rotatory aspect to also keep rotating, but then we also need translation of some other part of the device. So yes. Rack and pinion भी इनको कहा जाता है. Yes, you will, again, as I said, abhi we are learning how to analyze these mechanisms, and their design and their application will be dealt in much more detail in the mechanics of machines. क्योंकि उसमें हम इन्हीं mechanisms को देख रहे होंगे कि ये use कहाँ होने हैं exactly. Okay? Right. Okay, so any queries until the velocity of the upper rack R? और फिर अब D पे आते हैं हम जल्दी से. मैम जो वी आर हमने ली है ये हम रेफरेंस टू पॉइंट ए नहीं ले सकते? ले सकते हैं बिल्कुल. सो वो थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा. सो लेट्स सी, वी आर हमें ये पता है वो वी बी ही है, तो फिर क्या होगा, वो वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस्ड विद आर बी ए हो जाएगा. राइट, अब इसके अंदर मसला सिर्फ ये आ गया कि हमें वी ए लिखना पड़ेगा. राइट, सो वी हैव टू हैव 1.2 आई एंड देन प्लस ये कि अच्छा जी ओमेगा जो है वो था 8 -8 के है, क्रॉस्ड विद आर बी आई जो कि ये वाला है, छोटा वाला 0.1 आई जे. दैट्स फाइन. सिर्फ तला वही बात है ना कि ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, ये वाले जो पॉइंट सी है इधर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इनकी यूजफुलनेस ये होती है कि इट हैज़ अ ज़ीरो वेलोसिटी विच एलिमिनेट्स दिस ट्रांसलेशन जो ऐड करनी पड़े, और सिर्फ हमें रोटेशन को ही कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए वो यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक, so we can use any point as a base point. Right, now let's move to D. लेकिन what I'm going to do is we're going to read through it because I think we all get the picture. Of course कि again that thing, जैसे अभी तला ने कहा कि अगर आप A यूज़ करना चाहें तो हम A यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अब B यूज़ करना चाहें as the base point हम B यूज़ कर सकते हैं, या फिर as जो what I've been doing is कि use C as the base point, so we can carry on using C as the base point. इसकी velocity 0 है. So होगा क्या फिर कि हमें पता है if I'm trying to find VD, so that is VC plus omega crossed with RDC, और ये तो 0 है. So that is we just have the velocity of D because of rotation about C. That means if I join these two up, और ये मेरे पास ये RD with respect to C आ गया, that the velocity of D would be perpendicular to RDC. So that's why the velocity of D is in this direction. ठीक है जी. So just straightforwardly just calculating it, उसका magnitude is omega multiplied by RD with respect to C, या फिर RD जो यहाँ drawn है, और बस उनको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया. डायरेक्शन के लिए जस्ट नोटिंग फॉर एग्जांपल हियर कि वो 45 डिग्रीज है, वरना द अदर वे टू डू इट विच आई थिंक इज़ अ लिटिल बिट ईजियर इज़ के वी स्टिक टू आवर, sorry I know I've jumped a few slides here, but we stick to our vector approach, which means के okay इधर तो VA as Tala has suggested had been done, but my point is कि just stick to calculating the relative position vectors in a with a vector approach. तो अगर हम C को भी यूज़ कर रहे थे एज अ बेस पॉइंट, तो इस जगह का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने के बजाय इस लेंथ का अगर हम इसको एज अ वेक्टर लिख लेते तो हमारी पूरी कैलकुलेशन में वो डायरेक्टली VD एज अ वेक्टर ही आ जाता in its I and J components rather than just getting its magnitude. Okay, so please note that C is its instantaneous center of rotation. So VA moves horizontally, VB moves horizontally, ये ऊपर वाला point भी moves horizontally. All of these are going to be, sorry इनका मुझे proportional बनाने चाहिए थे to the distances. Next D जो है it will move perpendicular to this
the line joining D and C. So that's going to be in this direction and so on. Straightforward, I think. Now let's jump to the accelerations. Oof, right. Okay, so let's see. So imagine that we हमें velocity तो उसकी given थी the center of the double gear, but what if we also know कि उसकी acceleration क्या है? So if the acceleration of A is 3 meter per second square, then we need to remember, we have to remember कि हम लोगों ने rolling motion के analysis से already figure out किया हुआ है what would be the acceleration of the center of the wheel and the point of contact of the wheel where there is no relative motion. So we know कि A जो था वो था I think मुझे भी थोड़ा सा भूल जाता था लेकिन I think that was alpha r in the I direction और AC भी उसी से निकल सकता है. So we don't even need to memorize the other one. So if we just know this one और of course वो provided भी होगा. So I can see कि AA is alpha r in the I direction like so. So already I can figure out that this is 3 alpha or r is what? 0.15 again. So we can figure out what alpha would be. Noting लेकिन एक बात के उसकी direction alpha is 20 radian per second square. Lekin for its direction I have to refer to the figure. So if it was moving to the right, then this alpha must be clockwise. जो कि हमारे I, J, K components में actually minus K होता है. So this alpha is also minus 20K. ठीक. So now that we know कि इस चीज़ का alpha क्या है, that is the angular acceleration क्या है, फिर अब acceleration of B, C, D ये सब के सब निकल सकते हैं by just using A as our base point. Or noting कि we know alpha, we know omega was also minus 8K. So अब आगे से it's just a straightforward case of using relative acceleration analysis. So for example, let's do one of them. The acceleration of point B निकालनी है अगर. So now let's jump into it. अब देखते हैं. पहले तो ये बताएं कि चले. Somebody help me write down the expression of course first. A, B क्या होगा? I want to use A as my base point. Now help me out please. Is anybody out there? A Tala to the rescue of the whole class. हाँ जी आगे तला. plus alpha cross R. Cross R. R का क्या? R vector. कौन सा होगा वेक्टर? अच्छा अब तला आप जरा पॉज कीजिएगा. कोई और somebody should tell me what would this vector R be? ये पोजीशन वेक्टर कौन सा वाला है? I'm gonna B2A. 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 B2A से मुझे समझ नहीं आया exactly क्या मतलब है आपका. B से A जाऊं इधर यूं? B with respect to A. Yes, thank you. Alright, so B with respect to A. Perfect. Because हम B की acceleration निकाल रहे हैं with from A's acceleration. And then last term in the expression. Minus omega square. वापस तलहा back to the rescue and then RB with respect to A. ठीक है जी. So अब देखते हैं कि अगर हम we already know what A is, acceleration of A, we know what alpha is, we know what omega is. So अब आगे straightforward substitution है. So AA is 3I, alpha is minus, so minus 20K crossed with RB with respect to A, मतलब A से भी जाना है which is 0.1 J minus omega squared which is 8K, 8 का squared
0.1 j. So just solving this through, 20 times 0.1 should be 2, or k, that is an I, so this is 3i plus 2i, and then what is this? Minus 0.8 j. That is, the acceleration of B is 5i minus 0.8 j. So if I draw that out, 5i इस तरह का or 0.8 j, something like this. So B's actual total absolute acceleration is something in this direction. It is not perfectly horizontal. और इसी तरह हम, as I said, just using this expression we can find out the acceleration of D and acceleration of C. So I am gonna leave it क्योंकि I think it's a bit straightforward, but let's just see कि वो क्या बन जाती हैं. So as I said, acceleration of B turns out to be this in this direction, और D का भी जब अगर let's just see कि क्या आती है acceleration of, oh yeah, let me just check AB was correct or not. Oh wow, I made a mistake somewhere. It squared था. Guys, come on. कोई तो मुझे बता दिया करे ये बातें. Ah! Oof. I clicked the wrong button. I am so sorry, I clicked the wrong button right there. So anyway, we had 5i minus 6.4 j होना था because it was 8 squared, which accidentally I forgot to square it. Okay, so that's why वो तो फिर ज़्यादा, it's more, it's something like this rather than what I'd been drawing. Perfect. So let's just look at the other ones. So for AD, okay, fine, AC first. Again, for C as well, we're going to use A as our base point. So here we see that AC just turns out to be 9.6 in the J direction, ऊपर की तरफ. So AC is this one. And then the last but not the least, the AD. Again, using A as the base point, and then we straightforward arithmetic analysis, we find that AD is 12.6i and 3j. So it's 12.6 in this direction and then 3 in the upwards. So AD turns out to be this one. So the point being that for the accelerations, there's just no way to figure out कि वो क्या vector direction होगी until we actually find the respective components, right? Whereas for the velocities, वो हमें straightforward पता है कि वो they will just be perpendicular to the line joining the point to the center of rotation, right? So yep. All these a bit interesting कि इतना there's so much variation in the acceleration of different points on the rolling wheel. Okay, so that's it for today. We've managed to complete a few example problems for the accelerations. Have you guys got any questions related to these? No? Okay, so that's it for today. So we will have a quiz on Thursday as we normally do, and then from Thursday I do want to take some time to introduce what we're going to move on to. This was the end of kinematics of our rigid body, and please note that we are just considering the rigid body to be having just planar motion. So now, as you can imagine, the next step, what would be the next step? Anyone? Kinematics के बाद क्या आएगा?
Kinetics. Kinetics Kinetics. and acceleration. Exactly. So, Munzir, you've given us the even more specific one. So, it will be kinetics, and then in kinetics, we are going to look at the equation of motion. या फिर in other words जो हम ने particle के लिए देखा था Newton's second law, which is F is equals to ma, the relationship between force and acceleration. But this time around, we've got general motion. That is, हमारे पास rotation भी है on top of just translation. So we'll see what happens to the equation of motion when we have that case. So essentially, the point is we are moving to kinetics of the rigid body from Thursday onwards, right? So that's it, guys. Thank you very much. Have a good time till then. I'll see you on Thursday, inshallah. Allah Hafiz.